introduction to the microcontroller. Wow. So basically, if you have your first lecture notes in front of you, that हाँ LMS पे है ना, हाँ वो डाउनलोड कर सकते हैं. So first lab is on LMS. You can download from there, and basically what are the components of a microcontroller that usually are there inside a microcontroller. If you notice that conventional computer, PCB किधर गया, conventional computer का एक पड़ा हुआ था इधर, बड़ा सा जो था, ये नहीं वो जो कंप्यूटर का बोर्ड पड़ा हुआ था एक, नहीं ये भी नहीं तो यार, वो जो कंप्यूटर का पड़ा हुआ था एक, ये वाला. Alright. This is a conventional microprocessor PC system. So you can see here you get your microprocessor here. Put your RAMs here. This is an old one. बड़ा गंदा हुआ हुआ है. Put your RAMs here. This is external memory. This is a graphics card chip. This is peripheral chip. This is some other chip. So this here is the CPU. Only this one is the CPU. Everything else is outside the CPU, the central processing unit, जिसको हम कह सकते हैं CPU. हम तो सारे पूरा जो हाफिज सेंटर वाले तो सारे उसको CPU कह देते हैं, लेकिन एक्चुअली द इंजीनियर्स की जुबान में दिस इज द CPU, दैट इज द कंप्यूटर, that includes CPU and everything. So there are this IC is responsible for controlling these ports. So you can see here there are USB ports, old parallel port, serial port, network port, HDMI port, and so on. So these are ports in the olden days, and so that's what we can say is a complete microprocessor based system. Nothing, the memory is not inside the processor. IO system is not inside the processor. The LAN card is this one over here. So LAN is not part of the processor. All other peripheral devices are outside the processor. So processor is just a device. The simple model of a microprocessor is just, as I said, is something that is connected to a memory and it's reading and writing data to the memory and reading from the memory. That's a simple model of a processor. तो उल्टा क्यों हो गया है? उनके एंड पे सही है, आपको वो सीधा नजर आ रहा है, उल्टा नजर आ रहा है? अफजा, हसन, हम सर सीधा नजर आ रहा है. अच्छा मुझे उल्टा नजर आ रहा है. चलें खैर.
So this is a basic introduction to the micro. In case of a microcontroller, you have everything inside. You have a CPU, a central processing unit, and but you can say a microprocessor. You can also call it a microprocessor. Uh, it's also written as a microprocessor. This is often written as microcontroller. So this is microprocessor. There is a inside it there is a RAM. Within this there is a ROM. So in single chip, everything is on the chip. I/O, ADC, and DAC, digital to analog conversion, and analog to digital converters, and many more things. Communication like USB, could be CAN, as we talked about in the yesterday's lecture. So everything is just this inside this microcontroller. So what do you get if everything is inside? What do you get at the pins of this microcontroller? So the pin over here, pins, a 40-bit microcontroller will have 40 pins. As you remember from DLC, this is a 40-pin microcontroller. And if you remember from DLC, how do you count these pins? Pin number 1 कौन सी होगी? हाँ जी, पिन नंबर 1 कौन सी होगी? याद है ना आईसी की पिन ने कैसे काउंट करते थे आप लोग? सर हसीब, जो जीरो सर जो जीरो लेवल होती है वो वन होती है। ऊंचा बोलें, आवाज नहीं आ रही। सर जो जीरो लेवल होती है वो वन होती है, पिन नंबर वन। कौन सी? जो जीरो वाली होती है, जीरो हमारी जो होती है पिन, वो फर्स्ट पिन होती है। वैसे नहीं, काउंट इसमें करते बताएं हैं। कौन सी होगी इसमें? हम, इसमें कोई जीरो नहीं लिखा हुआ मैंने। जिसमें डॉट लगा होता है वो कह रही हैं आप? नहीं सर। चले मैं ये निशान भी लगा देता हूँ, कहीं माइक्रो कंट्रोलर पे ये निशान भी लगा होता है। आप सर बता इसके दें। लेफ्ट साइड वाली जो सबसे ऊपर वाली है। सॉरी सर लेफ्ट साइड पे जो इस डॉट के जो लेफ्ट साइड पे सबसे ऊपर है। सेकंड फ्रॉम टॉप ये किसने लिखा है? पिन नंबर 1 लेफ्ट साइड पे जो सबसे ऊपर वाली है ये वाली, दिस विल बी पिन नंबर 1 2। so since this is a 40 pin IC, so it will go to up to 20 and 21 up to 40. So with so many pins, of course, we can, what is the use of all of these pins? We study that throughout this course, the use of these pins, so how they are used. But for maybe first few lectures, uh, you can say that 32 of these pins, you can say almost 32, actually more, there are more to that, but you can say there are 32 pins like this, arranged like this. I'm not going to number them because on the numbering you can will see only on the microcontroller pinout.
वो है एक पड़ा हुआ कलर्ड पिन आउट, पिन आउट वो रंगों वांगों वाला. So these 8 pins on one side, there are 8 pins. Numbering could be anything, but they are called uh, port A. So this is a diagram of our PIC that we are going to use. The number of this PIC is 46K22. Focus क्यों नहीं हो रहा यार? सर हो गया. हो गया ना? So this is PIC Yes, sir. 46K22. And you can see the pin number 1 over here is the reset pin, and pin number 2 is A0, A1, A2, A3, A4, A5, and the pin number 6 and 7 are not, you know, contiguous. They are down there, pin number 7, 8, 0, 6 or 7. So there are 8 A port A. Similarly, there port B. Then there is port C and there is port D. So there are 4 ports that there is port E also, but we not talk. We 40 pin IC, so plenty of space to have plenty of ports. So this is port A. Similarly, we have port B. Similarly, we have port C. And then port D, and so on. So why is called a port? What is where does this word come from? The port word. PIC here is stands for peripheral interconnect component. So this is made by a company, and they're very popular. AVR and PIC microcontrollers are very uh, popular. You might come across many other computer microcontrollers also, but the fundamental, structure is same, that there is a microcontroller, inside there is a microprocessor, and then there are these ports for communicating. So why is this called a port? The question is, why is this called a port? That requires a bit of explaining to do, why they are called a port. If you remember, we'll talk about that in detail. If you remember that I said that there is basically a microprocessor. The job of the microprocessor is communicating uh, through address bus. It is uh, communicating with the memory. So there is a address bus, and there is a data bus. If you remember from the memories also had address bus and data bus. So address bus would tell the memory on which address to write, and data bus will tell what data to write. So basically, address is
you can say address is our pointer to the memory, and data is the data that is to be written to that memory location. Oh, okay. So there is this interesting change in this when you want to talk about port, that this address, if you take this address, right? If you take this address, of course, there is a read write signal also. And this database is bidirectional. Sometimes you want to rewrite to the memory location, sometimes you want to read to the memory location. And the read and write decision is made by this wire over here. If it is 1, we are reading from the memory, and if it is 0, we are writing to the memory. So some clever person said, okay, why not take this address, and use a big state catcher. Remember what is a state catcher? याद होगा आप लोगों को. So what is a state catcher? यस सर याद है. क्या होता है state catcher? सर वो आपकी स्टेट कैच करता है, मतलब जैसे 0 1 होती है, जो स्टेट होती है उसके हिसाब से वो कैच करता है कि कौन सा सीक्वेंस चल रहा है, क्या स्टेट चल रही है. Right. Anybody else? What is a state catcher? जरा थोड़ा सा ये चैट नीचे कर दो यार, ताकि मुझे और लोग नजर आए. हम नजर आ रहे हैं. हाँ. तो इब्राहिम, what is a state catcher? सर वो उसके अंदर हम एंड गेट और नॉट गेट वगैरह लगा के ना हम देखते हैं कि कौन सी क्या हमारे बिट्स का सीक्वेंस आ रहा है किसी टाइम पे. तो अगर जब वो सीक्वेंस 2 हो जाता है तो हमारा फिर स्टेट कैचर का आउटपुट 1 हो जाता है. वेरी गुड यार इब्राहिम, आपने दिल खुश कर दिया यार, आपको तो बहुत कुछ याद है. इब्राहिम के लिए ढेर सारी तालियां. Very good. So basically, the stage catcher's job is to continuously watch this output and see if a particular sequence appears on this, its output becomes 1. If any, this is address is always changing. Processor is always writing something. So if a certain address you want to catch, you need a state catcher. So whenever that sequence occurs, you will catch the output. For example, if it is an 8-bit, say 14-bit address, for 8-bit, 14-bit address, and you want to catch this number, for example, 0, 14-bit में maximum आएगा 14-bit, 10-bit अभी कर लेते हैं. 1 1 0 0 0, फर्ज करें 1 1 1. तो इसका मतलब है कि जब भी ये सीक्वेंस आए यहाँ पे, तो ये वाली आउटपुट 1 हो जाए. तो इसके लिए आपको ये A0 है, ये A 10 बिट है, तो ये A9 बन जाएगा. तो यू हैव टू गिव दिस एज स्टेट, एंड ये इन्वर्ट करके देनी पड़ेगी, ये सीधा देना पड़ेगा. So that whenever this sequence occurs, this output becomes 1. इसका नाम रख लेते हैं फिर लोग कि दिस इज इन हेक्स. अगर आप देखें 0 0 लगाना पड़ेगा 4 के कॉम्बिनेशन बनाने के लिए. सो दिस इज 30F. So 30F. So this line is called 30F line,
or 30F address or 30F pointer. So we are just getting out of all the memory location that processor can walk through, we are just getting one this little address, and this address is 0330F. वैसे 3F8 होना चाहिए था, मेरे दिन में वो भी आ रहा था, लेकिन 30F फर्क करें, ये वाला एड्रेस ले लेते हैं. So whenever processor is going to address this location, memory probably will becomes a kind of don't care. उसमें भी डाटा राइट हो सकता है, बट दिस आउटपुट विल बिकम 1. अब इस आउटपुट को हम लगा देते हैं किसी रजिस्टर के साथ. एट बिट रजिस्टर, और ये आपकी डाटा बस जो है वो इधर से आ जाती है एज सच. और यहां से आपकी आउटपुट आ जाती है 8 आउटपुट. अब क्या होता है कि whenever I'm going to ये इसकी क्लॉक है. So whenever I write something to this address, मेमोरी में भी राइट हो जाएगा, लेकिन वो जब वो डाटा यहाँ पे आएगा तो इस रजिस्टर में भी लैच हो जाएगा, इस रजिस्टर में भी राइट हो जाएगा. जब इस रजिस्टर पे राइट होगा तो वो यहाँ पे अपीयर होगा. तो हमने सॉफ्टवेयर में कोई आपको याद है कि वो एक हेडर फाइल्स होती हैं, उन हेडर फाइल्स में हम कहीं लिख देते हैं कि हैश डिफाइन. हर प्रोसेसर के साथ उसकी हेडर फाइल आती है, हम लिख देते हैं हैश डिफाइन 308 फॉर एग्जाम्पल पोर्ट ए. हैश डिफाइन क्या करता है, कोई बता सकता है? व्हाट डज दिस डू? हैश डिफाइन, ये चूंकि हेक्स एड्रेस है तो इसके साथ 0x भी लगाना पड़ेगा. ये पोर्ट हैश डिफाइन पहले ही क्या आता है? हैश डिफाइन में मुझे याद नहीं पहले क्या आता है. किसी ने हैश डिफाइन यूज किया है कभी? एनीवन, एनी वन ऑफ यू, किसी ने हैश डिफाइन यूज किया और सी में? कोई भी नहीं है? मसला नो सर, नो सर, नहीं किया. सी नहीं की भी, सी प्लस प्लस की भी है, उसमें कभी सी नहीं प्लस use प्लस में ही होता है, जाहिर है उसमें भी होता है हैश डिफाइन. किया. नहीं सर, हमने नहीं किया. है? मैंने तो नहीं किया हुआ, बाकी किसी का नहीं पता. उसमें क्या करते हैं? हैश डिफाइन क्या करता है? किसी में भी कर लें, आर्डिनो में कर लें, सी का ये तो कीवर्ड है हैश डिफाइन. ये करता क्या है? वो इधर जाएं जरा, उस पर सर्च करें, ये है आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर पे हैश डिफाइन. इन सी कर दें. नीचे देखें तो कोड नीचे. हाँ जी, एक सर एग्जांपल अगर आइए. ये इसमें कह रहा है इंटरनेट के ऊपर कि ये मतलब जैसे आप एक चीज डिफाइन करते हैं तो उसको बाद में चेंज नहीं कर सकते. ना, जैसे आप एक कांस्टेंट कांस्टेंट नहीं बता नहीं रहे नहीं, ये चीज नहीं है. मैं कहता हूँ पाई इज इक्वल टू 3.14. अब क्या होगा? अब जहां भी मैंने, ये बेसिकली बताता है कट पेस्ट है. ये कट पेस्ट याद रखें. हैश डिफाइन इज नथिंग बट कट पेस्ट, के जहां भी पाई आ रहा है ना, उस कोड में इसको कट कर दो पाई को, और उसकी जगह क्या पेस्ट कर दो? 3.14. 3.14.
तो आपको बार बार 3.14 लिखने की जरूरत नहीं है। आप जहां भी पाए लिखेंगे ना कोड में, उसको वो 3.14 से पेस्ट कर देगा। जहां भी कोई कहीं पाए लिखा होगा उसको ये। इसी तरह अगर मैं कह दूं हैश डिफाइन 0x, सॉरी, पोर्ट ए 0x30F, तो अब क्या होगा? जहां भी पोर्ट ए लिखा होगा वहां पर ये लिखा जाएगा। तो जब इस की सी जब कंपाइल होगी और जब इसका कोड कंपाइल होने से पहले पोर्ट ए का, तो उसको नहीं पता ये क्या, कौन सा वेरिएबल, ये क्या चीज है। तो जहां जहां भी पोर्ट ए लिखा होगा ये डिफाइन एक टेबल बन जाता है कि जहां पोर्ट ए लिखा हो उसको इससे रिप्लेस करना है। तो जितने भी आपने हैश डिफाइन किए होते हैं बेसिकली वो आपको हेल्प करते हैं कट एंड पेस्ट करने में, कि बार बार आप ये लिखें, आप पोर्ट ए लिख दें। अब आप जब मेन में जाके कहेंगे, ये हमने एक तरह से पोर्ट ए को एड्रेस के साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना? पोर्ट एक वेरिएबल को ये वाली जो पोर्ट है इसको ये नाम दे दिया। अब ये पोर्ट इसलिए है कि अब ये डायरेक्टली ये वाली पिन जो है ना ये डायरेक्टली यहाँ पे अवेलेबल है। So port is basically where you can talk to the outside world. Memory location is something else. Port is like a memory location, but here you can talk to the outside world. तो ये अगर आपने ये नाम नहीं पसंद तो आप ये भी लिख सकते हैं। तो अगर आपको हैश डिफाइन, ये हैश डिफाइन उस प्रोसेसर के अंदर खुद ब खुद बिल्ट इन होते हैं उसकी। जब मैं एक माइक्रो कंट्रोलर कहता हूँ ना कि इस माइक्रो कंट्रोलर के लिए प्रोग्रामिंग करनी है, तो हर प्रोग्रामिंग उसके हर एक के अपने पोर्ट एड्रेसेस होते हैं हर एक के लिए। तो उससे ये होता है, फायदा ये होता है कि जब उसकी लाइब्रेरी फाइल लिंक करने के लिए लाइब्रेरी फाइल आती है तो पोर्ट ए के साथ आगे वो एड्रेस लिखा होता है, क्योंकि आपका कोड चेंज नहीं होता। कल अगर आपका कोड चेंज, ये हार्डवेयर चेंज हो जाए, ये किसी और एड्रेस पे चली जाए और नीचे आपका कोड चेंज नहीं होगा, पोर्ट ए जो भी लिखा होगा वो वैसे ही रहेगा। आप सिर्फ ऊपर जाके इसको चेंज कर दें। So that gives you very powerful, framework. हैश डिफाइन इज वेरी पावरफुल थिंग। हम लोग इसको कभी यूज देखते नहीं है, सोचते नहीं है, बट दिस इज वेरी पावरफुल थिंग। तो अब अगर मैं जब कोड में जाऊंगा, नीचे मैं लिख देता हूं, फर्ज करें अब ये वेरिएबल की तरह बन गया है। अब मैं लिखूंगा स्टार, sorry, when I say port A, I can say 0x30F. This I can directly define this pointer is equal to वैल्यू को दे देता हूँ यहाँ पर से कोई हेक्स में ही वैल्यू दे देता हूँ 0x, कोई वैल्यू बताएं, कोई 8 बिट की वैल्यू 0x करके हम हेक्स में दे देते हैं। फर्ज करें मैं दे देता हूँ 33। So this is basically the pointer, and this is a value that I am going to write on that pointer. So what is going to happen when this address appears on the address bus? सेम टाइम प्रोसेसर क्या करता है, वो ये वाली वैल्यू डाटा बस पे रखेगा, इस डाटा बस पे ये वाली वैल्यू रखेगा 33 और हेक्स में, और एड्रेस बस पे वैल्यू रखेगा 0x30F। तो ये 33 थोड़ी देर पहले रखेगा। तो ये वैल्यू स्टेप में होता है, राइट अगर आपको याद हो, मैंने पढ़ा था कि पहले डाटा रखते हैं फिर एड्रेस रखते हैं। तो ये 33 यहाँ पे आ जाएगा। जब वो एड्रेस रखेगा यहाँ पे, तो यहाँ ये वाली क्लॉक पे यहाँ पे पल्स जनरेट होगी, क्योंकि ये स्टेट कैचर है, एक्टिवेट होगा, पल्स जनरेट होगी।
या ये पल्स जनरेट होगी तो ये 0x33 जो है ना, ये यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर आपने कोई एलईडी वगैरह लगाए हुए हैं इस पोर्ट के ऊपर, आप डायरेक्टली आप इंटरफेस कर सकते हैं कोई भी चीज। यहाँ पे आप एलईडी लगा देते हैं इस तरह करके, एक एलईडी लगा दें, ये 330 ओम का रजिस्टर लगा दें या 220 ओम का रजिस्टर लगा दें। अब जब ये पोर्ट ए की बिट नंबर, ये बिट 0 1 2 3 अप टू 7, तो ये अगर बिट 0 1 होगी तो ये एलईडी ऑन हो जाएगा, अगर बिट 0 होगी तो ये एलईडी ऑफ हो जाएगा। तो व्हेन आई एम राइटिंग 0x33, which is 33 is what, 0011 0011। तो अगर मैंने ये 8 एलईडी लगाए हुए हैं यहाँ पे, तो ये वाला एलईडी ऑन हो जाएगा, ये वाला ऑन हो जाएगा, ये वाला ऑफ हो जाएगा, ये वाला ऑफ, ये वाला ऑन, ये वाला ऑन, ये वाला ऑफ, ये वाला ऑफ। So now I can really see how my software is interacting with the hardware। एक visual contact बड़ा जबरदस्त बन जाता है, which will becomes really very exciting for the people who are using this। उनको ये देख के बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा मजा आता है इसको। I can just like logic design, I can program this anytime I want। I can write something over here। I'm doing is writing to this address, I can write to port A, so that will change this। So I can also say port A। तो ये वाली चीज जो है, ये चूंकि हैश डिफाइन हुई है इसके बराबर, तो जब ये कोड चलेगा तो ये खुद ही यहाँ पर असेंबली लैंग्वेज में ये इससे रिप्लेस हो जाएगा और इस एड्रेस पे ये डाटा राइट होगा। तो आपको रीडेबिलिटी आपकी बढ़ जाती है। आपको इसको देख के पता नहीं लग रहा कि ये कौन सी पोर्ट है, लेकिन यहां से देखते हैं तो आपको पता लग जाता है कि पोर्ट ए है। कल अगर ये एड्रेस चेंज हो जाता है किसी और माइक्रो कंट्रोलर में, आपका कोड चेंज नहीं होगा, क्योंकि हैश डिफाइन सारी पोर्ट्स की उसके अपने कोड उसके साथ ही आती हैं। हर माइक्रो कंट्रोलर का जब आप प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसकी एक लाइब्रेरीज इंपोर्ट हो जाती हैं खुद ब खुद उस, और वो दे बिकम पार्ट ऑफ योर प्रोजेक्ट। तो पोर्ट ए इज डिफाइंड ऑन दो इन दोज लाइब्रेरीज। So you need to, there are hundreds and thousands of different types of microcontrollers। So you just select a microcontroller in the microcontroller list, and when you select that and you say that this is the microcontroller I'm going to use, then it automatically, the project builder imports all the related hash defines in the type of a file। तो ये सारे उसमें आ जाते हैं। तो यू डोंट हैव टू देन वरी अबाउट कि ये इसका एड्रेस क्या है, इस पोर्ट का एड्रेस क्या है, उस पोर्ट का एड्रेस क्या है, इसका 0। सो दैट वे यू, इट्स नॉट योर हेडेक कि मैं जाके देखूं किस पोर्ट पे पोर्ट ए है, किस पे पोर्ट बी है, किस पे पोर्ट सी है, किस पे पोर्ट डी है। सो दिस इज a one very interesting so this is a really what a microcontroller are really good at doing, that you have ports and you can make set them high and low, high and low using software। And so maybe we can also see that how can we use them as input के तौर पे हम इनको कैसे यूज कर सकते हैं। how do we use them as an input? अभी आउटसाइड वर्ड्स पे अभी हमने राइट करना सीखा है। हम एलईडी को ऑन ऑफ कर सकते हैं, यहाँ पे कोई रिले भी हो सकती है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, एक फैन लगा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है थ्रू अ रिले। आई कैन टर्न इट ऑन एंड ऑफ। तो in microcontroller every bit becomes very important, very important, every bit, because here you can have a led on the second port a bit you could have something some other thing like a bulb, on the third thing you can have another thing,
connected. So all of these bits are individually have a very powerful kind of function in microcontroller world. Each bit, each bit has a powerful function. It's not just the port as a whole. Every bit has a function over here. If you want to just control a single bit, the microcontroller software provide that also. So, for example, this is a yellow LED. I connect another on bit 7. I connect a red LED. Red LED, yellow LED, और या ग्रीन कर लेते हैं, येलो और रेड में इतना शायद नजर ना आए, ग्रीन एलईडी. तो आई कैन विजुअली टर्न ऑन. अगर ये ऑन है तो मैं नहीं चाहूंगा कि जब मैं इसको ऑफ करूं तो ये भी ऑफ हो जाए. इंडिविजुअल बिट्स को भी मैं कर सकता हूं कंट्रोल. ये सिर्फ माइक्रो कंट्रोलर में, इसको कहते हैं बिट एड्रेसेबल memories, bit addressable memory, where you can actually not only write a byte, but you can also write a bit. Every bit also has an address. So this is very, very powerful thing about the microcontroller, that the memory is basically bit addressable. You can not only write a byte, you can also write a bit. So I can say port A dot bit 7 is equal to 1. अब मैं यहाँ 0 और 1 के अलावा कुछ नहीं दे सकता. इसका मतलब कि इस पोर्ट की सिर्फ बिट 7 को 1 कर दो, ग्रीन एलईडी ऑन हो जाएगा, बाकी को कुछ नहीं होगा. I can define here, hash define green bit 7. Then I can say port A dot green. किस तरह ग्रीन लिखा है, चले थोड़ा सा कैपिटल स्मॉल वाला फर्क हो गया, लेकिन डोंट माइंड दैट. सॉफ्टवेयर इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, ये केस सेंसिटिव है. इक्वल टू 1. तो यहाँ ग्रीन लिखा होगा, वहां पे वो खुद ब खुद उसको बिट 7 से कट एंड पेस्ट, उसको बिट 7 से रिप्लेस कर देगी. अब ये पोर्ट ए डॉट ग्रीन आपके कोड में पता नहीं 15 जगह अपीयर हो रहा होगा. तो अगर आपने कल ये पोर्ट ग्रीन जो है यहाँ से हटा के किसी और पे लगा दिया एलईडी, तो आपको इसको चेंज, सारा कोड चेंज करने की जरूरत नहीं है. आप सिर्फ यहाँ पे आए, यहाँ पे बिट 5 कर दें. तो कल अगर आपने यहाँ से उठा के हार्डवेयर चेंज किया है और इसको बिट 5 से लगा दिया है, तो ये सारा कोड नहीं चेंज होगा, बस इसको बिट 5 कर दें. ये नजर आ रहा है यार? ऊपर थोड़ा ऊपर करना यार. So you have to do is hash define green bit 5. So wherever green appears, it will be replaced with bit 5. तो इस तरह से बड़ी अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं. यू कैन रियली बिकम अ वेरी गुड वेरी रीडेबल प्रोग्रामिंग आपको आ सकती है. आपको समझ आएगी मैं क्या कर रहे हूँ और सो ऑन. मेरा ख्याल आज के लिए इतने काफी, मैं थक गया हूँ. ठीक है, यस सर, हमारे भी इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो गई है. ये इतना ही आप थोड़ा हजम करें इसको, सोचें ये मैंने क्या पढ़ाया है, क्या करने की कोशिश की है मैंने आज.
तो आप इसको ही Yes, sir. हजम करें, फिर बाकी हम अगली दफा आपको थोड़ा सा और खाना देंगे खाने के लिए। खाना जरा थोड़ा सा इन पर्सन हाजमूला भी खा लेते, ज्यादा समझ आ जाएगी। हाँ अगली दफा इन पर्सन होगी। आज ये हाँ, थोड़ा सा बैकग्राउंड इंशाल्लाह। मैंने सर ये पोर्ट ऑनलाइन सही नहीं रहता ना, ऑनलाइन रहा ना फिर मसला हो जाता है थोड़ा। पोर्ट का सर आपको हाजमा कर मुश्किल हो जाता है। ऑनलाइन तो ये करनी नहीं हमने, आपको पता ही है कि इफ इट नॉट डजन इफ इट अगर अल्लाह ने चाहा तो ये ऑफलाइन ही होगी हमारी लैब। बट इन एनी इंशाल्लाह सर। केस इफ इट गोज ऑनलाइन आपको हम इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और टीसीएस करेंगे सारा सामान। यस सर। पहले भी आपके पास एक किट पड़ी हुई है ना सबके पास, यस सर, पड़ी है। संभाली हुई है ना? यस सर। जी सर, थोड़ी मिट्टी पड़ेगी उसके, मतलब वो है उधर ही पड़ी है। मिट्टी पड़ गई है जब आप नहीं नहाते सर, हैं मेरे यार, उसको मेरे भी वाली साफ पे नहीं किया पड़ी करें। हुई हैं खुद तो आप सर, हर सब पे नहीं पड़ी हुई। क्या सबकी किट्स के ऊपर अच्छा नहीं मिट्टी सबकी पड़ी मिट्टी हुई, नहीं पड़ी हुई हमने बहरहाल संभाल ये के कि रखी हुई है। अगर आप महीने में एक दफा नहाते हैं तो यार उसको भी एक दफा साफ किया करें महीने में। डोंट डू दिस लाइक दैट। इतना इसको मैं भी तो ईद का नहाया नहीं, ईद का मैं नहाया नहीं, तो वो भी साथ ही मिट्टी उसको ही पड़ गई। आप नहाए नहीं है उस वक्त से? माय गॉड, ईद पे नहीं नहाए यार? ईद पे तो भाई ईद लोग पे नहाया था नहाते हैं। सर, उसके बाद नहीं नहाया। अच्छा छोटी ईद पे नहाता हूँ हर साल बस। बड़ी ईद पे नहीं नहाना चाहिए ना, वो तो जरूरी नहीं है। आप वो बकरे को उस दिन नहलाते हैं, उसको फिर प्यार से ज़िबा कर देते हैं, तो उस दिन तो नहाने की जरूरत नहीं है। नहाना तो उस दिन बकरे ने होता है बेशक, बेसिकली। एनीवे तो बकरा चले ठीक है, फिर सी यू नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट वीक आपके साथ इन पर्सन इंशाल्लाह मुलाकात होगी। आप थोड़ा ये पोर्ट को समझेंगे इंशाल्लाह क्या सर। इनका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। ठीक है सर, अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।